कल्याण, आपने वो फोटो ले लिया था स्क्रीनशॉट का? जी सर, डाल दिया था ग्रुप में। ओके। यहाँ वाईफाई ऑफ हो गई थी। हम्म। So this was it. So we have taken down some important points today according to TCM. इसके अलावा there are other points also. Back shoe points, front shoe points, yuan source points, low connecting points, Ziegler point. So crossing points we have made a note of. Local point selection. Point selection may be divided into three broad groupings. Local points. Local refers to the vicinity of the pain. जहां पर पेन है, जहां पर डिजीज है, wherever the disease is located in your body, whichever मेरिडियन, जो भी मेरिडियन वहां से जा रही है, उसके जो पॉइंट्स हैं डिजीज के चारों तरफ, दे आर नोन एज लोकल पॉइंट्स। राइट। So if the pain is in the head, so whichever meridian is going in the head and near the pain, they are known as local points. Neck, forearm, lower abdomen, knee, foot, etc. जहां पर पेन है, जहां पर प्रॉब्लम है, वहां तो लोकल पॉइंट का भी यूज करेंगे और डिस्टल का भी यूज करेंगे। सपोज यू हैव लेग एक, पैर में पेन है, यूबी मेरिडियन में पेन है, तो यूबी मेरिडियन में अगर पेन है, इफ यू हैव पेन इन द यूबी along यूबी मेरिडियन एंड व्हेन यू प्रेस द यूबी मेरिडियन, द पेशेंट इज रिलीव्ड, पेशेंट फील्स बेटर। वो बोलता है हमारा पैर बांध देने से अच्छा लगता है, प्रेस करने से। दैट मीन्स देर इज ए डेफिशिएंसी, राइट? एंड इफ ही सेज नो नो डोंट प्रेस माय पॉइंट और इट इज नॉट गिविंग मी एनी रिलीफ, that means it is excess. If it is excess, use distal point. If it is deficiency, use local points. Okay. Diseases of the limbs and superficial diseases of the body are commonly treated by local points. For example, pain of the knee can be treated at local points, GB34, SP9, जहां भी घुटने के पास जो भी points हैं, so that can be used. And special point is of course ST35 is also used for knee pain. ठीक है। Sridhar, I had recommended someone. I had given your phone number to. He had some ligament problem. Did he contact you? चलो, नहीं किया तो। Pain of the wrist is treated as local points. TW4, TW5, LI5 is up. So if whenever there is deficiency, then also there can be pain, and there is excess, then also there can be pain. Many diseases of the head and body may also be treated through local points. Eye diseases can be treated through UB1, GB1, ear diseases, TW21, SI19, GB2, ये तीनों पॉइंट है यार। ठीक है ना? स्टमक एक, ST21, UB21 and REN12. So, efficacy of needling treating local points to treat diseases can be explained not only based on traditional channel theory, but more recently by neural segment theory as well. For example, acupuncture anesthesia, the point SI18, a point on trigeminal nerve branch, is used for surgery on the cranium, and point LI18 for operations on the thyroid. LI18 यहाँ है। दिस इज नोन एज ट्राइजेमिनल नर्व के दो तीन ब्रांचेस हैं, एक इधर आती है ST6 से लेके ST4 तक, और एक SI18 तक आती है, और एक यहाँ आती है। सो
So these points are also used for anesthesia. Similarly, clinical treatment of acupuncture से anesthesia के लिए there is a whole book, and people have expertise in anesthesia through acupuncture. Diseases of viscera means organs. It is common to select vertebral points of the same horizontal प्लेन, यानी जैसे हार्ट है, जिस लेवल पे हार्ट है उसी लेवल पे बैक में जो पेन पॉइंट है ना, TW5 एंड TW6 या UB14 15 etc. दैट इज यूज्ड. सो जिस लेवल पे जो ऑर्गन है, विच एवर लेवल द ऑर्गन इज देयर, सेम हॉरिजेंटल प्लेन, द पॉइंट्स आर chosen. That is also known as local points, neighboring neural segments as that plane. An important point to keep in mind with while selecting local distal points for treating a disease is that energy is drawn at the point of treatment. Therefore, in case of deficiency, local points are generally selected. Distal point selection. Distal refers to a location far from the site of pain or disease, usually a point below the elbow or knee, the shoe points. Shoe points are all distal points. The method is commonly used to treat internal organs. Internal organs के लिए distal point use करते हैं, local नहीं use करते. LU6 is a big point for huge cuffing. लगातार cuffing हो रही हो, non-stop. Then also you can use LU6. Or otherwise, cuffing blood, that also you can use. P6 you can use for chest pain. That is distal point. There are main 6 distal points according to TCM. You know it or should I list it? LI4 for face, LU7 for upper back, P6 for midriff and upper abdomen. ये सब पता है कि नहीं? 6 points. SP6 for lower front and back, and UB कौन सा है? 54 for the back. Okay. So these 6 points, we all know about it. So I am not writing it, but they are also important. कहाँ है? देख के you should be able to do it. And ST36 is for abdomen. Any problem in abdomen. अब एग्जाम्पल्स दिया हुआ है उन्होंने बहुत सा. डिस्टल पॉइंट LI4 and ST44 फॉर टूथेक. टूथेक हो जाए या कभी कभी क्या होता है, जिसकी मोस्टैचेस होती है ना, यहाँ पे भी पेन होता है ऊपर. वेरी वेरी सीवियर पेन, पिन पॉइंटेड पेन. There also ST44 works very well. LI channel enters the lower gums and can stop toothache on the lower jaw. Stomach channel enters the upper gum and ST4 can stop toothaches on the upper jaw. So LI4 for the lower jaw, lower teeth problem, and ST44 for the upper jaw. ठीक है. SI3 for stiff neck, because SI3 is one of the 8 confluent points intersecting with DU channel, master point for the governor vessel. यहाँ से governor vessel जाती, so SI3 can be used. So that is also distal point. UB54 for lower back, because UB channel runs through lower back. The technique of needling distal point is related to channel theory of root and branch, whereby diseases above is treated by a point below and vice versa.
ऊपर की डिजीज के लिए नीचे का पॉइंट और नीचे की डिजीज के लिए ऊपर का पॉइंट, ये यूज करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टल पॉइंट यूज। These points may also be selected on the basis of nerve distribution. Generally, this is most useful for treatment of disorders of the limb, whereby a point located on a nerve trunk or root above the disease is selected for needling. So, disease of fingers may be treated via points on related nerves. नेक से जो फीडिंग होती है नर्व का डर्मेट्रॉन देख के यू कैन use those points. So this is like they are trying to map with Western medical science. P6 on the median nerve near the wrist and Li11 on the radial nerve near the elbow, as well as point on more distal brachial plexus. ये सब है लेकिन this is outdated. Symptomatic point selections. Local and distal point selections are based upon the distance of the points from the site of the disease. However, some diseases are not local but systemic in nature. Systemic का मतलब होता है physical organs and physical body का point. हम्म तो जो डिजीज सिस्टमिक है इन नेचर एंड कैन बी ट्रीटेड एट पॉइंट long associated with relieving a particular disease. Prominent among those points are the meeting influential points. तो सिस्टमिक डिजीज माने ऑर्गन का डिजीज, फिजिकल डिजीज जब होता है, सो थ्रू दिस, जैसे UB17 फॉर डिजीजेस अफेक्टिंग ब्लड, 17 फॉर ची एटसेट्रा, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सब देख लिया है. सो वी हैव मेड ए लिस्ट ऑल्सो, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. इट्स अनदर रिपीट ऑफ द लिस्ट. सब कुछ इसमें रिपीट है. Whatever I have written in that is all repeated. Selection of points based on specific uses. Certain individual points have also traditionally been useful in treating specific symptoms. DU14 for fever, because DU14 is crossing 6 yang channels. DU14 के साथ हम लोग दो और पॉइंट यूज करते हैं, LI4 and LI11. These 3 points for general fever you can always apply. So Li11 on both sides, Li4 on both sides, and Du14 on the governor vessel in the center. Du26 is another important emergency point for reviving a patient who has fallen unconscious due to low BP. देखो, लो बीपी से अगर कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, देन हम लोग DU26 यूज करते हैं, यहाँ पर है ना. और अगर हाई बीपी के कारण अनकॉन्शियस हो जाए तो वी यूज K1 इन द सोन. सोर थ्रोट हो जाता है तो ये जाता नहीं है. सोर थ्रोट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स. क्या करना चाहिए? LU11 एंड SI1 में से एक ड्रॉप ब्लड निकाल देना चाहिए, LU11 के पास और SI1 के पास. LU11, SP10, SP6 for huge itching. Li11, SP10 and SP6. Li11 cleans wind and heat, SP10 and SP6 to nourish blood and expel wind evil. अब इस सब का कुछ लॉजिक नहीं है. These points we should remember.
याद रखना चाहिए, इचिंग हो जाए तो SP6 और SP10 काम करता बहुत अच्छा। और साथ में LI11, LI11 क्या करता है, दिस क्लियर्स सम काइंड ऑफ, जो बाहर से कुछ टॉक्सिन्स आ जाए, विच इज इन्फेक्शन काइंड ऑफ, तो ऐसा इन्फेक्शन क्या करता है, हीट जनरेट करता है, उसको क्लियर करता है। सो इवन इन फीवर वी कैन यूज इट। जो सांस के माध्यम से बैक्टीरिया आता है जिसकी वजह से फीवर हो सकता है, LI11 विल डू इट। सो LI11 फॉर फीवर वी ऑल्सो यूज इट फॉर ईचिंग। REN4 and ST36 for general weakness we can use. REN4 tonifies yuan source chi. REN4 is connected to original chi, that is what they mean. Original chi, that is Mingmen. And stomach 36 tonifies digestive functions, hence increasing the digestive system, digestive uh, energy, that is food chi. So it will also help in blood generation. क्यों? क्योंकि ब्लड कैसे होता है, खाने से बनता है। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल, स्प्लीन, पैनक्रियास। सो पॉइंट्स चोजन बेस्ड ऑन वेस्टर्न मेडिकल थ्योरी, वो भी है एक। Huge and important contribution of Dr. R. Wall of Germany is worth mentioning here, who joined the Oriental theory, acupuncture with modern science. Example, H8 on left and right treat mitral valve and tricuspid valve. ये सब मैं बता चुका हूँ कई बार। नहीं, H8, but the location of this H8 is a little different than the location of TCM point. Dr. Wall ने बहुत से पॉइंट्स को बताया, which point is connected to which particular organ or part of organ. So that also we use. Combining points. In addition to the methods of individual point selection outlined above, there are several traditional methods of combining one point with others in acupuncture prescription. These techniques are flexible, permitting many variations according to particular needs of the case. Combination को देख लें थोड़ा सा। Combining points on the front, that is front of the body, with the points on the back, that is yang aspect. Combination of abdomen yin points and back yang points. क्या क्या एग्जांपल दिया कंबाइनिंग? स्टमक डिजीज के लिए ST21 on the abdomen and UB45 on the back would be needled in tandem. स्टमक का कोई भी डिजीज हो तो फ्रंट में स्टमक 21 इज राइट देयर, एंड एब्डोमेन के अलावा बैक में UB45। सर ST21 है ना? हाँ जी। ठीक। ये दो पॉइंट का कॉम्बिनेशन बहुत काम करता है। एक मिनट।
Okay, it's okay. Yes, ST21 है. Among the most commonly used front-back combinations are two special point groups, the back shoe points and front shoe points, because these points are closely related to disease of Jang organ. एक बात ये है, हमने भी देखा है इसको, बहुत बार यूज किया है. किसी भी ऑर्गन का कोई भी प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम है, सांस है, कफिंग है, ये है वो है, तो आप उसका फ्रंट शू पॉइंट और बैक शू पॉइंट लगाओ. लीवर का कुछ भी प्रॉब्लम है, लीवर का फ्रंट शू पॉइंट और बैक शू पॉइंट लगाओ. स्प्लीन का कुछ भी पॉइंट, हार्ट का कुछ भी पॉइंट है, फ्रंट शू बैक शू पॉइंट. तो ऑर्गन के लिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम, आप सिंपली रेंट करो फ्रंट शू पॉइंट एंड बैक शू पॉइंट. कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बहुत मुश्किल है, क्रॉनिक हो गया, कुछ भी हो गया, और आदमी को रोज लगाने के लिए पॉइंट आप जा भी नहीं सकते. क्या करना चाहिए? दो पॉइंट उसको सिखाने का. यू हैव टू टीच हिम हाउ टू डू इट. पुट ए कलर ऑल्सो यू कैन पुट, एंड you can put on the front shoe point and on the back shoe point. Not only on original point, you can do it on sujok also. Front shoe और back shoe point उसको बताना है, and he can apply it. He or she. Any problem, lungs का problem, liver का problem, spleen का problem, stomach का problem, any problem, large intestine का problem. कोई organ बीमार है, you should just put front shoe and back shoe. That will help you a lot. Right? For example, अगर मान लो स्टमक का कोई भी डिजीज हो गया, तो स्टमक का फ्रंट शू पॉइंट कौन सा है? CV12. बैक शू पॉइंट कौन सा है? UB21. यू सिंपली पुट दीज टू पॉइंट्स. Hmm? Then there is another combination. This was what? Combining points on the front and back. So front shoe and back shoe point कंबाइन करने से किसी भी ऑर्गन की प्रॉब्लम, किसी भी सिस्टम का प्रॉब्लम ठीक होता है. Yin or yang channel में, as we know, the primary yang channels are connected with the primary yin channels. Yang और yang yin channel connected रहते हैं. By combining a point on yang channel with another on the paired yin channel, cumulative effect is greater than the needling either point separately. दोनों पॉइंट्स को यूज करने से ज्यादा इफेक्ट होता है. दैट्स ऑल दैट दे न्यू टुडे. आज हम लोग बहुत कुछ जानते हैं यिन और यांग को करने के लिए ना. So this is all very trivial. We know a lot. And when you come in level 1 and level 2, five element theory, you will know it. How beautifully this whole system of logic I have developed, which gives you to use these points on yin and yang meridians. By combining a point on yang channel, the effect is cumulative. Like stomach 36 on yang channel with SP4 on the yin channel for stomach diseases. LU9 with Li11 on paired yang channel for cuffing. The most well-known combination of this kind are between Yuan source point on the first channel, primarily affected by a disease, and the Luo connecting point on the paired channel. In this combination, the source point is called the host and the connecting point is called the guest, transferring the chi from yin to yang and yang to yin. This we have known, low connecting point and source point. Low connecting point से एक channel आकर के source point of partner पे मिलता है. All this we know. So we can use these 2 points. Low connecting point on one and the source point on the other partner meridian.
So the diseases affecting lung channel may be treated through channel source point Lu9 in combination with low connecting point Li6 of its paired yang partner. Conversely, a disease affecting the large intestine channel could be treated by that of channel secrets Li4 source point together with the connecting Lu7 CN partner. The method would also encompass the use of single point, the low connecting point. ये सब डिटेल में we have done it in our Panchatattva Siddhant. You will find the whole table is there. Combination of low connecting point and source point. Panchatattva Siddhant. My book. If you can lay your hands on that, the whole chart is made. Combining point on the left with points on the right. Because channel points are bilateral, it is common to treat diseases of internal organs by manipulating the same point on both sides in order to strengthen the effect. So the same point can be used on both sides. That's what they say. UB21 on both left and right of the spine. ST36 on both legs can treat diseases of the stomach. पहले स्टमक का ही डिजीज ज्यादा होता था, आज भी होता है, स्टमक से ही बहुत सी डिजीज होती है. In case of stroke, not only a point on side affected by paralysis is selected, but same point on the healthy side may be used as well. Combining points above with points below. So EOV वाले points जितने भी हैं, they can be done. एक point ऊपर हाथ में होता है, एक point पैर में होता है. Extraordinary vessels के master and couple points. So those combinations are also quite common and can be used. Combining local with distal points. When there is stomach problem, the local point REN12 and UB21, the distal point ST36, pericardium 6, SP4 could be used separately. The combination method, however, uses both the local and distal points together. Specific points are those on the 14 meridians with specific therapeutic significance. Since specific points have different distributions and effects, they bear different names. The following represent a brief description. वो बोल रहे हैं कि कैसे कब यूज करना चाहिए, वेल पॉइंट, स्प्रिंग पॉइंट, स्ट्रीम पॉइंट, all this we have seen, right? So we have already seen this, so we don't have to do it. Then there was another combination which was quite well known and traditionally, mother and son point. Mother-son treatment with points on mother or son channel. For an excess syndrome of liver channel, one who treat the yang spring point on the heart channel. Because the heart is the fire channel that makes it liver's sun. So H8 is the horary fire point on liver's sun channel. Hence, you are sedating the sun for excess syndrome. Deficiency syndrome, the liver channel can be treated by tonifying the horary point on the mother channel. So this is only partial 4-point Korean 4-point formula. If you know Korean 4-point formula, this is only half of it that the TCM is talking. So Korean 4-point formula is in fact a development of this only. Yeah? So if there is an excess, sun point sedation, and then you go to sun meridian and sedate the horary point.
there. फॉर एग्जाम्पल लिवर एक्सेस हो गया, स्टैग्नेशन ऑफ ची है, तो क्या करें? लिवर 2 को सेडेट करें, और लिवर की जो सन मेरिडियन इज हार्ट मेरिडियन, गो टू हार्ट एंड sedate H8. That's what they say. This is half of Orion 4-point formula. Orion 4-point formula is more polished and better. Why? Because they came to know, Korean people, that horary point is the boss of whole of body of that particular variety of chi. उस वैरायटी के ची के लिए कौन सबसे ज्यादा, किसके पास सबसे ज्यादा क्वांटिटी है, वो horary point पर है. So they used it as control point, like we are using pericardium and triple warmer for 5 element theory. They used horary points. It's very good in fact. और बहुत अच्छा काम करता है 4-point formula. But these 2 points they discussed here. So this is all for a little bit whatever it is. Huh? Back shoe and front shoe points और क्लोजली रिलेटेड, वो तो हमने बताया आपको कि बैक शू एंड फ्रंट शू पॉइंट किसी भी चाहे सॉलिड ऑर्गन हो चाहे हॉलो ऑर्गन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो यू कैन यूज ओनली 2 पॉइंट्स, बैक शू एंड फ्रंट शू, फिनिश्ड. yin disease of Zhangfu organs can be treated with back shoe point. If the yin is excess, treat back shoe point. If the yang is excess, treat front shoe point. For example, REN3, movement point of UB is needed to treat copious frequent urination. And burning pain in the urethra, dark yellow urine, etc. due to damp heat in UB. Backshoe points above, including UB17, can in addition be used to the yin diseases described above. ये सब सही है. Combining points on the back shoe with points of front shoe, है ना, वो तो हमने आपको बता ही दिया. ऑफकोर्स लीवर का प्रॉब्लम है तो क्या यूज करेंगे? बैक शू ऑफ लिवर इज UB18, फ्रंट शू ऑफ लिवर इज लिवर 14. सो यूज दीज 2 पॉइंट्स. ट्रीटमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर डिजीजेस कुछ भी होने तो क्या करेंगे? UB19 एंड GB24. ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक डिजीजेस कुछ भी हो क्या कर सकते हैं? UB21 एंड REN12. सो वी कैन डू लाइक दैट. यांग चैनल्स की डिजीज होती है तो हम लोग यूज करते हैं front shoe point with lower Hisi points on yang channel. So front shoe points can be used with lower Hisi points of yang channels. So there are 3 extra Hisi points on stomach में, ST37, ST39 and UB53 for LI, SI and triple warmer. For example, ST25 front shoe point है large intestine का, and ST37 we can use for treatment of damp heat in the large intestine. Damp heat का मतलब क्या होगा? Dysentery, जिसमें म्यूकस आता है. Lower Hisi points treats few organ diseases. So large intestine, small intestine का अगर प्रॉब्लम है, या गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम, जिसका भी कोई भी ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन का प्रॉब्लम है, तो लोअर Hisi पॉइंट शुड बी यूज्ड. Combining backshoe points with yuan source points treats yin diseases. Yin excess होता है तो source point and the backshoe part if you use, so the disease है yin diseases
means yin dominated diseases, they can be treated. Like UB13 and LU9, treatment of asthma due to lungs chi deficiency. UB13 बैक्शू पॉइंट है, LU9 सोर्स पॉइंट है लंग्स का। तो लंग्स की ची डेफिशिएंसी होने की वजह से अगर आवाज धीरे आ रही है, ये सब हो रहा है, तो ये दोनों एस्मा कैन बी ट्रीटेड। UB23 एंड K3 ट्रीटमेंट फॉर स्पर्मेटेरिया, माने अगर सीमेन इज नॉट enough to impregnate your wife, then you can use UB23 and K3. So the quantity of semen will increase. अगर किडनी ची डेफिशिएंसी की वजह से स्पर्म्स कम बन रहे हैं तो स्पर्म काउंट भी कम है, तब भी हो सकता है। एंड सो K3 and UB23, of course, they can be used. Backshoe points and UR source points can both treat deficiency diseases together. Their effects are enhanced. फोर्स पॉइंट एंड बैकशू पॉइंट जब यूज करते हैं तो फंक्शन बढ़ जाता है। फंक्शन बढ़ जाता है माने जो यीन सेट इन हो जाएगी ना, फंक्शन अगर किसी भी इन एनी ऑर्गन इफ देर इज एक्स्ट्रा यीन तो फंक्शन विल बी लेस। ऐसे डिजीज के लिए जो फंक्शनैलिटी कम हो जाती है, काम कम करने लग जाता है, उसके लिए सोर्स पॉइंट एंड द बैकशू पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, चाहे वो किडनी वीक हो गई हो, चाहे वो लंग्स वीक हो गया हो, चाहे हार्ट वीक हो गई हो, सब में कर सकते हैं। Combining yuan source point of Zhang organs, that is solid organs, with yuan source point of Fu organs. Yuan source point of yang channels on the hand combined with the yuan source point of yin channel on the foot, or the yuan source point of the yin channel on the hand combined with the yuan source point of the yang channel on the foot. ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है, कभी कभी मैंने यूज किया है। तो हाथ का यांग चैनल का सोर्स पॉइंट और पैर के यिन चैनल का सोर्स पॉइंट, सोर्स पॉइंट सोर्स पॉइंट, एक में यांग का, एक में यिन का। हाथ का यांग है तो पैर का यिन, पैर का यांग है तो यिन, हाथ का यिन। समझ में आ रही है? हाथ के यिन मेरिडियन का सोर्स पॉइंट, पैर के यांग मेरिडियन का सोर्स पॉइंट, उससे कनेक्शन हो रहा है। सिमिलरली पैर के यांग मेरिडियन का सोर्स पॉइंट, हाथ के यिन मेरिडियन के सोर्स पॉइंट, दोनों को कंबाइन करने से भी ठीक होता है। उसके एग्जाम्पल है लिवर 3। लिवर 3 क्या है? पैर के यिन मेरिडियन का सोर्स पॉइंट है, ठीक है, लिवर का। कंबाइन करो किससे? Li4 क्या है? यांग मेरिडियन है हाथ में, Li उसका सोर्स पॉइंट। तो लिवर 3 एंड Li4, आपको पता है 4 गेट्स, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। कुछ भी होने दो, ये दो 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 पॉइंट दोनों तरफ लगा दो, एक बार पूरी सर्कुलेशन ठीक हो जाती है जी की। क्रॉनिक हो गया है, कुछ भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक बार ये लगाओ भाई। इमीडिएट इफेक्ट आता है, इमीडिएट। डिजीनेस, टिनिटस, numb limbs, tight tendons due to liver yin deficiency. This is known as 4 gates. It's a wonderful effect on blood and body fluid. Yuan source points combination with the luo connecting points connecting internally and externally related channels. ये हम लोग बात कर चुके हैं नहीं, because there is a connection between
low connecting point and source point of the partner, right? युआन सोर्स पॉइंट कंबाइंड विद हीसी पॉइंट्स। युआन सोर्स पॉइंट को बैकशू पॉइंट से हम लोगों ने देखा था कि अगर डेफिशिएंसी ऑफ फंक्शन कम हो रहा है कोई भी ऑर्गन का, तो हम क्या करते हैं, सोर्स पॉइंट को बैकशू पॉइंट से कम कंबाइन करते हैं, तो फंक्शन बढ़ जाता है। हीसी पॉइंट्स के साथ भी कर सकते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर मतलब जो पार्टनर चैनल्स हैं उनके रिलेशनशिप में युआन सोर्स पॉइंट ऑफ यिन चैनल कंबाइंड विद हीसी पॉइंट और लोअर हीसी पॉइंट ऑफ यांग चैनल। फॉर एग्जांपल sp3 युआन सोर्स पॉइंट है स्प्लीन का, किससे कंबाइन करें, इसका पार्टनर कौन है, स्टमक, उसका हीसी पॉइंट sp3 एंड st36 यूज करें तो एब्डोमिनल पेन, डायरिया, नौसिया, वॉमिटिंग, नहीं ये सब ठीक होता है। Not only that, this will also take care of say running nose और phlegm coming out, ये सब ठीक हो जाता है। लिवर 3 सोर्स पॉइंट है, लिवर का पार्टनर कौन है, गॉल ब्लैडर, उसका हीसी पॉइंट कौन सा है, GB34। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने क्या कहा कि जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेट कौन करता है, स्प्लीन, जनरेट कौन करता है, लिवर। तो सोर्स पॉइंट क्या जनरेट करता है, ह्यूमिडिटी, और यांग चैनल में ह्यूमिडिटी क्या है, हीसी पॉइंट है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग 5 एलिमेंट कंट्रोल से जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आप देख रहे हैं तो वी ऑलवेज डू इट। जब भी कभी फू ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यही करते हैं, क्योंकि जनरेशन फू ऑर्गन करता नहीं, सॉलिड ऑर्गन करता। तो अगर ह्यूमिडिटी जनरेट करनी है, यांग उसमें डालना है, तो कहां से डालेंगे, ठीक है ना। पता नहीं था इनको 5 एलिमेंट किसी को, इसलिए ऐसा लिखा है, दे डिडंट नो, 5 एलिमेंट पता ही नहीं था। ये सबसे क्लियर हो रहा है ना कि चाइनीज को कुछ पता नहीं था 5 एलिमेंट के बारे में, जो आज मैं बताता हूँ लेवल 1 लेवल 2 में, फार बियॉन्ड दिस, से बहुत ज्यादा है। और जिनको नहीं मालूम है वो क्या बोलते हैं, एब्सर्ड। आज भी बहुत से लोग हैं जिनको एब्सर्ड लगता है, दे कांट यूज 5 एलिमेंट थ्योरी, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट 5 एलिमेंट। बहुत कुछ हमने सिस्टमेटाइज कर दिया है, नाउ 5 एलिमेंट कैन बी यूज्ड वेरी वेल with whatever a system has been now developed, put in place, that can help to use various points, family combinations. सब experimental points हैं, and then comes EOV points. Master and coupled points are supposed to be important, और इनकी combination आनी चाहिए, SP4 P6 TW5 LU7, two shoe stream points which are SI3 and GB41, UB62 and K6 have no function other than their connections to 8 extras, yin kiao mai and yang kiao mai. So these are definitely. Then there is a list. SP4 for diseases of spleen, stomach, and chong mai. P6 for disease of pericardium, heart, triple warmer, and yin vi mai. LU7 for disease of lungs and LI.
in my case it's what I have done, यूवी में हमने डेवलप करके लॉ बना दिया, रूल्स, चार्ट है कब क्या यूज करें। सो एज पर रूल्स, बट अभी तक इनके पास रूल नहीं था, तो वॉट एवर दे कुड गैदर एक्सपेरिमेंटली इंपेरिकल फार्मूले से, तो SI3 यूज कर सकते हैं स्मॉल इंटेस्टीन के लिए, डूमाई के लिए, UB62 फॉर द डिजीज ऑफ यूबी, ये सब अलग अलग लिख दिया। Z clef points. Each of the 12 regular channels has one Z clef point. In addition to one Z clef point can be found on each of the yin V, yang V, yin gyao and yang gyao। इसमें भी है, माने चार जो extraordinary vessels हैं, they are touching, they have points like yin, Z cleft, Z cleft on yin channels can stop bleeding। उस दिन हमने बताया था नोज ब्लीडिंग के लिए कुछ भी हो, सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ है, पेरिकार्डियम। सो पेरिकार्डियम की जीक्लेफ पॉइंट को पहले टच करना चाहिए, फिर वेर एवर द मेरे ब्लीडिंग इज हैपनिंग, जहां से ब्लड निकल रहा है वो कौन सा मेरिडियन है, उसकी जीक्लेफ पॉइंट, राइट। अगर नाक से निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से निकल रहा है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑलवेज यूज जीक्लेफ पॉइंट्स। बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है, उसको पहले रोकना पड़ेगा। और यांग चैनल के जो हैं Ziegler point, they can be used for pains, various pain। इसमें भी LI7 बहुत अच्छा है इनके हिसाब से, ST34 भी बहुत अच्छा है। And I tell you another point, SI7, SI7 is very good point wherever there is yin excess। More or less we have covered everything। I shall recommend that you should go through this book, right? And whenever you find, and if you find that some page something is not understandable, you can, so generation and distribution of chi, you can read these chapters, right? These are page number 180 to 190। This we are not going to do it, connecting meridians etc, that will be too much, but that's it। So we have done it, and I hope it is all। So we are meeting tomorrow with questions and general discussions, and tomorrow we will finish this। So tomorrow will be the last class, and it will be free for all of you। Whatever you can ask, you can do, and whatever important points, if you want to rediscuss, फिर से पढ़ कुछ डिस्कस करना है, कुछ करना है, we can do it। Otherwise tomorrow will be the last class for this session। Thank you and good night। So there will be two videos, one will be before the internet was lost, and one after we have recovered it, okay।